गुड इवनिंग रचित एंड गोपाल जी। सभी लोग फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आप सभी लोगों को नववर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। जितनी भी कामनाएं हो सभी की पूरी हो, जो जो विशेष हो। धन्यवाद। सपना देखिए, अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है और स्पेलिंग वगैरह में सब कुछ आता है, ग्रामर में दिक्कत होता है तो ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा पढ़िए। ग्रामर पोर्शन से शॉर्ट हैंड का कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट हैंड जो लैंग्वेज है, बट ग्रामर इसमें तब काम आती है जब आप मैटर को ट्रांसक्राइब करती हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे अपना जो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट करने का, जो कि जो जो वर्ड सिमिलर हैं, सो वहाँ पे ग्रामर का यूज़ होता है। ठीक है, बट शॉर्ट हैंड सीखने के लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सीख सकते हैं। हर हर महादेव। स्टेनो अड्डा। आज 1 जनवरी था तो बाबा विश्वनाथ धाम पे दर्शन करके आ रहा हूँ। अभी जस्ट अभी आ ही रहा हूँ, सोचा कि क्लास ले लूँ आज। फर्स्ट डे ही छुट्टी नहीं करनी चाहिए ना। काल करे सो आज कर, राज करे सो अब। आप सभी लोग मना लिए 31st एंड 1 जनवरी। सपना देखिए, शॉर्ट हैंड की किताब खत्म करने के बाद कोई किताब नहीं होती है उसके लिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड का देखिए बेसिक होता है, बेसिक का आपने कंप्लीट कर रखा है, तो बेसिक कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एडवांस आउटलाइंस की तरफ जाना होगा। और कुछ मैगजीन्स आती हैं जैसे कि प्रोग्रेसिव हो गया, कैलाश चंद्र हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ आप अदर्स मैटर्स भी आप लिखना स्टार्ट करिए। और बुक में 110 एक्सरसाइज के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्शंस दिए हुए हैं या जो भी फ्रेजेस दिए हुए हैं, एडवांस फ्रेजोग्राफी है, सो उसको भी आप देखिए और करिए प्रैक्टिस। रेगुलर मैगजीन्स करिए, उसी से इम्प्रूवमेंट होगी। और डिक्टेशंस डेली लिखे। डिक्टेशंस जितने भी लोग लिख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी औकात से ऊपर लिखें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बस जितना आप रेगुलर लिखते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, तभी आपकी फ्लुएंसी और स्पीड दोनों बढ़ेगी। क्योंकि मैटर में जब भी फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत होते हैं, सो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी का?
शॉर्ट हैंड का रूल, किसी को भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर में कोई भी रूल अगर फंस रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो सिर्फ रूल नंबर आप बता दीजिए, मैं रूल आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बेसिक चैप्टर्स देख रहे होते हैं और उनको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। देखिए, चैप्टर पढ़ाने का तरीका एक नहीं होता, कई सारे तरीके होते हैं आपको समझाने के। बस यूट्यूब की क्लासेस में क्या होता है कि लाइव क्लास नहीं है, सो इसमें मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, हो सकता है आपको समझ में आए या फिर ना आए। तो उसके कई सारे तरीके उसके हो सकते हैं समझाने के। ठीक है, एक तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें ज़्यादा सोचा मत करिए, पूछ लिया करिए रूल्स वगैरह जो भी चाहिए जहाँ पे भी प्रॉब्लम है। चलिए, देखिए, डिक्टेशन लेने के बाद टाइपिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाने के बाद पानी पीना, या कह सकते हैं खाना खाने से पहले हाथ धुलना। बहुत लोग पानी नहीं पीते। ठीक है, बिना डिक्टेशन के अधूरा हो जाएगा। चलिए, अभी आप लोग मैटर लिखेंगे। और कोई डाउट नहीं है ना किसी का? वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो डिक्टेशन लिख रहे हैं या जो शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और कोई डाउट हो उनको ऑनलाइन सीखने में या अदर चीज़ों में। क्योंकि दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो ऑनलाइन का यूज़ करिए आप लोग सही तरीके से। कॉपी निकाल लीजिए, मैटर लिखे। कॉपी में इसे शॉर्ट हैंड की इस कॉपी में लिखेंगे मैटर। ठीक है, ये वेलकम। रेडी? स्टार्ट। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-24. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at the rate 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development reach all regions and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled caste, and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and a war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stands with their head held high, and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for Indians' independence will, with joy, bless us our endeavors
Going forward, our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of several accomplishments: unique world class digital public infrastructure, e.g., Aadhaar, COVID, and UPI, COVID vaccination, drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate related goals, mission life, and national hydrogen mission. During the COVID 19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry, with a sense to apply free food grains to over 80 crore persons for 28 months, continuing our commitment to ensure food and nutritional security. We are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grains to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about rupees 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen Indians' role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiv Kutumbakam, we are steering an ambitious, people centric agenda to address global challenges. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of living and a life of dignity. The per capita income has more than doubled to rupees 197 lakh. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as governed and innovative country with a conducive environment for the idea of a GST. We are not discussing or debating the idea of a GST. That debate has gone on in this country for several years, and I think the country is now ready to embrace the idea of a GST, just as the earlier GST bill introduced by the finance minister was opposed by several parties, including the BJP. The 2014 bill is also being opposed. The idea was not opposed. The bill was opposed because we felt that it was possible to have a more perfect bill. And I choose my words carefully. There can be no such thing as a perfect bill, and in a legislation as transformative and as revolutionary as the Goods and Services Tax Bill, I don't think anyone from the government side
will claim that this is a perfect bill. It can never be a perfect bill, but we have found that there were too many flaws in the bill, and many of those flaws could be fixed by addressing them seriously. We decided that we could support the bill. I am happy that in the last few weeks there has been a serious engagement by the government with the opposition parties, including my party, and I am glad that considerable progress has been made. So, there are four major issues. I will touch briefly upon the first three issues because it is the last issue that concerns me the most, and I want to take my time dealing with that at some length. The first one is this. I wish to point out to the Honorable Finance Minister that there are still pieces of clumsy drafting in this bill. For example, in the present list of amendments circulated, you have made some provisions for what will go into the Consolidated Fund of India and what will not go into the Consolidated Fund of India. This problem should have been noticed much earlier. It should have come in the draft bill, but it has come today in the form of an amendment, and while I will not take too much time explaining what I have in mind. If the Honorable Finance Minister reads it more carefully, he will find pieces of clumsy drafting. Mr. Deputy Chairman, I am happy to be able to speak in this House once again. I do so for the first time on this side of the House, and that makes me double happy. I welcome the friendly and conciliatory tone of the Honorable Finance Minister's speech. I think the tone and approach has changed over the last 3 or 4 weeks, and that argues well for this bill, although it will depend upon the outcome of this debate and the assurances that the government is able to give on many issues which he himself hinted are still outstanding issues and need to be resolved. If I may say, in the lighter vein, between 2011 to 14, I did virtually what was called traveling between my Prime Minister, the leader of the opposition in the Lok Sabha, the leader of the opposition in Rajya Sabha, and the empowered Council of State Finance Ministers. We tried to pass the GST bill with the support of the principal opposition party, and we failed. In the last 18 months, the government tried to pass it without the support of the principal opposition party, and I am glad that you have also failed. Today we pass the bill, which I hope you will after we listen to your speech. It will be on the basis of serious discussions, serious negotiations, and serious debate. It is far too important legislation to be passed on a partisan basis. In fact, I commented once, I hope the finance minister
will pass the bill not on the strength of numbers but on the strength of his arguments. So, I am glad that the finance minister has acknowledged that it was the UPA government which first occasionally announced the government's intention to bring about the GST on the 28th February 2005. It was announced in the Lok Sabha in the course of the budget speech I caught in the medium to long term. It is my goal that the entire production and the distribution chain should be covered by a national VAT or even better a goods and services tax encompassing both the center and the states. It has, of course, taken us 11 years to arrive at this point, but I think the journey has been a learning experience for everyone in the house and outside. So, let me make it very clear that the Congress party was never opposed to the ideal of a GST. In fact, I believe about an hour ago, the finance minister said so much in an interview to a television channel, and I thank him for making that acknowledgement. We were never opposed to Mother Earth and blue skies for Make in India with particular emphasis on MSMEs, startups, defense, manufacturing, automobiles, electronics, fabs and batteries, and medical devices. 5. Water management, clean rivers. 6. Blue economy. 7. Space programs, Gyan Ganga, Chandrayaan, and satellite programs. 8. Self sufficiency and export of food grains, pulses, oil seeds, fruits, and vegetables. 9. Healthy society, Ayushman Bharat, well nourished women and children. Safety of citizens, and 10. Team India with Jan Bhagidari. Minimum government, maximum governance in the country. With this vision set before us and with the mandate given by its people, we are determined to take India to that highest that it richly deserves. I strongly believe that with the clear headed leadership of Honorable Prime Minister, we can achieve our goal. The Indian economy will grow to become a $3 trillion economy in the current year. It is now the sixth largest in the world. 5 years ago, it was at the 11th position in purchasing power parity terms. We are, in fact, the third largest economy already, only next to China and the USA. To attain this and more, we need to continue undertaking many structural reforms. In the last 5 years, we saw many big farmers, in particular in indirect taxation, bankruptcy, and real estate. While these reforms were happening, here in the parliament, the common man's life was being changed through mudra loans to help him do his business, and through several programs it was being ensured that his oblique her kitchen had become smokeless. His or her house got electricity connections,
and women's dignity was respected with the provision of toilets in homes. The common man was served even as major transformational reforms were being rolled out. And for this to continue, we need to invest heavily in infrastructure, in digital economy, and on job creation in a small and medium firms. Respected speaker, sir, it took over 55 years for the Indian economy to reach $1 trillion, but when the country and her people's hearts are filled with asha, with sauce, and akansha, that is, when hearts are filled with hope, trust, and aspirations, we in 5 years added $1 trillion. Today, we are nearing a $3 trillion level. So, when we aspire to reach a $5 trillion level, many wonder full stop. लिख लिया मैटर तुम? कौन कौन पूरा मैटर लिखा है कमेंट करिए. कौन कौन पूरा मैटर लिखा है? कोई नहीं लिख पाया क्या? अटेंडेंस यार आप लोग लगाइए अपने, कौन कौन क्लास में है अभी, कौन कौन देख रहा है? हरवीर का गेम ओवर हो गया.
ऐसे गोल लिखा हुआ है। आज थोड़ा सा लेंदी मैटर आप लोगों को बोला गया है जानबूझ के, क्योंकि 1 जनवरी है, कुछ तो अलग होना चाहिए। और इससे आप लोगों की हैबिट भी बनती है, जैसे कि रेगुलर आप लोग लगभग 1200-1300 वर्ड लिख रहे थे, सेम मैटर 3 बार। आज आपको बोले गए हैं 804 के 2 मैटर्स बोले गए हैं, 1680 वर्ड। ठीक है, स्पीड आपकी 90 की थी, एक्यूरेट 90 की स्पीड थी। वन थाउजेंड नहीं था, 1680 वर्ड्स थे। और कोई डाउट है किसी का? नहीं, कोई डाउट नहीं। कल से क्लासेस सारी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, ठीक है। आज एक्चुअली पेड बैच ऑफ थी, इसलिए मैंने 9 बजे आज क्लास ली है। रेगुलर क्लास आपकी 7 बजे होती है, 7 बजे ही होगी लाइव क्लास। यहाँ यूट्यूब की जो लाइव क्लास है वो 7 बजे होगी, एंड पेड बैचेस जो जिस टाइम पे चल रहे हैं उस टाइम पे चलेंगी। ठीक है, मैटर आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में भेज दूंगा अभी मैं। हरवीर, क्या डाउट है बताइए। पेपर आप लोगों का आज चेक हो जाएगा, कल रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे पेपर वाला। एक बार ज़रा मुझे रीसेंड, आप लोग जो लोग भी ट्रांसक्राइब किए हुए हैं रीसेंड कर देंगे, जो जो कॉपी आपकी चेक नहीं हुई है। मैटर्स को ट्रांसक्राइब करना चाहे तो कर भी सकते हैं। आज 1 जनवरी है, सो आपको दे रहा हूँ कि आपको खुद से करना है, बिना मेरे कहे हुए। और कोई मैटर लिखेंगे या और कोई डाउट किसी का?
थक गया क्या लिख के आप लोग डिक्टेशन? लीगल लिखना है अभी? लीगल मैटर मेरे पास कोई अच्छा मैटर पड़ा होगा सर, देखता हूँ। लीगल मैटर आप लोग जजमेंट्स ज़्यादा लिखा करिए, ठीक है? एक मिनट वेट करिए। चलिए लीगल मैटर थोड़ा सा अच्छा आप लोग लिखेंगे आज, जो लीगल के लायक हो। मैगजीन्स वाला लीगल नहीं बोलेंगे। चलिए, हरवीर लीगल की स्पीड 60 नहीं होती है। 60 पे बोलूँगा तो 2026 तक बोलता रह जाऊँगा मैटर में, ठीक है? चलिए लिखे, भागेगा कोई नहीं, ठीक है? सभी को लिखना है। खाना पीना आप लोग बाद में खा लीजिएगा, पहले मैटर लिखे। रेडी? स्टार्ट। That in compliance to the order of Honorable High Court, Allahabad, dated 27/8/2015 and 11/9/2015, passed in Civil Miscellaneous Writ Petition 48497 of 2015, and the remedy of filing the reference of dispute under arbitration clause before the arbitrator, the present plaint has been filed by the plaintiff to stay the effect and operation of officer's order dated 26/2015 and the recovery certificate letter dated 25/6/2015 issued by the defendant number 1 for the amount of rupees 284,639, and notice citation dated 27/2015 issued from the office of the Tehsildar, Sadar District, Varanasi, before this learned court oblique authority. A copy of the office order dated 26/2015 and recovery certificate letter dated 25/6/2015 issued by defendant number 1, and notice citation dated 27/2015 issued by Tehsildar, Sadar District, Varanasi, are collectively filed here with, and District Varanasi are
collectively filed herewith and marked as annexure number 1, 2, and 3 to this plaint that the plaintiff has been given license of fishing in Adwa Sareni to Jalasi district Mirzapur on 4/4/2012 for the fishing year 2012 to 36/2015 by means of open tender cum auction held on 22/3/2012, which was conferred on 4/4/2012. The tender of the plaintiff has been accepted and the plaintiff has deposited rupees 195,000 on 22/3/2012 against the amount of bid, i.e. rupees 7,80,000, which is 1/4 of the bid as per the agreement for the year 2013-14, and has also given a fixed deposit of rupees 129,100 as security money, and in this regard, as an agreement deed has been executed by defendant number 2 in favor of the plaintiff for fishing in Adawa Sreni to Jalasi district Mirzapur from 4/4/2012 to 36/2015, wide agreement dated 18/8/2012 for kind perusal of this learned court authority a copy of the agreement deed executed by defendant number 2 in favor of the plaintiff for fishing in Adawa Sreni to Jalasi district Mirzapur from 4/4/2012 to 36/2015, wide agreement dated 18/8/2012 is being filed herewith and marked as annexure number 4 to this plaint. That the plaintiff has deposited entire agreement amount of year 2012-13 and 13-14 and in year 2014-15 up to the month of 31st January 2015, i.e. rupees 7,01,000 in favor of defendant number 1 as per agreement condition, which is admitted fact mentioned in the office order dated 20/6/2015 passed by defendant number 1, that on 27/2/2015 all of sudden a cyclone came and 3 fishing boat capsized in the Adawa Jalasi during the course of catching of fishes, and due to this a person named Chandrama Prasad, who was no novice in swimming, as such he drowned and died in the Jalasi, while 5 other persons saved themselves by swimming. The dead body of the Chandrama Prasad was recovered by police and has been sent for conducting post-mortem. This sad news has been published in many Hindi daily newspapers. A copy of the relevant extract of the news item dated 28/2/2015 is filed here with and is marked as annexure number 5 to this plaint. That the plaintiff white letter dated 1/3/2015 intimated to the defendant number 1 oblique managing director with regard to the said demise of one workman during the course of fishing, and plaintiff has prayed to the defendant number 1 to direct the superintendent of police district Mirzapur for providing security to the plaintiff for starting the catching fishes in Jalsaya. In fact,
The deceased Chandrama Prasad belongs to the Adawa village where the Jalasya is situated. As such, the villagers became annoyed and have restrained the plaintiff for catching the fishes in Jalasya, although plaintiff has given rupees 50,000 to the family members of the deceased Chandrama Prasad. A copy of the letter dated 1/3/2015 given by the plaintiff to the defendant number 1 is filed here with and is marked as annexure number 6 to this plaint. That the defendant number 1 has not obliged to the plaintiff by giving protection for catching the fishes is remaining months, as such plaintiff was deprived from catching fishes in the month of March, April and May. That in this regard, plaintiff has again wrote a letter on 1/6/2015 to the defendant number 1 and has intimated that catching of fishes has not been performed due to strong opposition of villagers. As such, plaintiff is unable to deposit the due installments of month February and March due to financial crisis. Plaintiff requested to defendant number 1 to adjust the security amount of the plaintiff as an installment which is due for the plaintiff. A copy of letter dated 1/6/2015 given by the plaintiff to the defendant number 1 is filed here with and is marked as annexure number 7 to this plaint. That lastly, in the month of June, the protection has been given and plaintiff has started again catching the fishes in Adawa Jalashay and all of sudden, without considering the representation letter dated 1/6/2015, the office of the defendant number 1 has passed an order dated 20/6/2015 by means of which recovery proceeding has been initiated for the overdue amount of rupees 2,81,079 along with interest. Again, plaintiff and the security money rupees 1,29,100 and bracket FDR bracket close of the plaintiff has been forfeited and plaintiff has been blacklisted for 3 years and has cancelled the agreement of catching the fishes in Adawa Sreni to Jalasya district Mirzapur, which is wholly illegal, arbitrary and against the spirit of natural justice and equity. Full stop. मैटर आपको कम ही बोला गया, 22 पैराग्राफ्स का था एंड सिर्फ 8 पैराग्राफ्स बोले गए हैं. लिख लिया आप लोगों ने? देखिए, स्पीड स्टार्टिंग में थोड़ी सी नॉर्मल रखा था क्योंकि सभी लोग थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे, बट लास्ट में मैंने इसलिए बोला था तेज क्योंकि जो लोग लीगल मैटर लिख रहे हैं उनको फास्ट स्पीड चाहिए होती है. सो अराउंड 110 के आस 110 120 के आसपास थी स्पीड. स्टार्टिंग में कम थी, बाद में मैंने 120 तक खींचा था.
देखिए डिजिट्स आए थे तो लीगल मैटर में बिना डिजिट के कोई मतलब होता नहीं है। डिजिट्स कैच करना पड़ेगा आपको, आपकी स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए कि डिजिट्स बस सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। और जो लोग भी स्टेनोग्राफर्स होते हैं उनको अगर कोई 10 अंक का नंबर एक बार में बोल देता है सो वो दोबारा नहीं पूछते कि क्या बोले, जरा फिर से बताओ। कोई भी आदमी अगर आपसे नंबर बोले कितना भी तेज वो बोल दे तो आप उसको एक बार में अगर लिख ले रहे हैं इसका मतलब कि आप एक स्टेनोग्राफर हैं, क्योंकि एक आम आदमी नहीं लिख सकता इतनी जल्दी। जैसे कोई 10 अंक का नंबर बोला अपना और आपने एक बार में उसको लिख लिया, दोबारा आपने पूछा नहीं उससे, इसका मतलब आपकी कैचिंग पावर अच्छी है और आप एक स्टेनोग्राफर हैं। नहीं लिख पा रहे हैं तो कोशिश करिए लिखने की। आज का मैटर कोई मांगेगा नहीं क्योंकि काफ़ी बड़ा मैटर है, इसके पहले वाला मैं भेज दूंगा और जजमेंट है तो उसको शेयर नहीं कर सकता मैं, हमारे ही केसेस के जजमेंट से तो शेयर नहीं करना उसको, ठीक है। एनी डाउट्स? तो आज का मैटर कैसा रहा, मज़ा आया लिख के? क्लास ओवर की जाए या फिर कोई और डाउट है किसी का, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये मैटर्स जो भी आज मैं बोला हूँ ये कहीं आपको यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी चैनल पे मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। ना ही लीगल की डिक्टेशन ऐसे मिलेंगे, ना ही जनरल का इतना हार्ड मैटर का मिलेगा। और फ्लक्चुएशंस तो शायद ही कहीं आपको मिले, क्योंकि ज़्यादातर मैटर सब एक इक्वल लेंथ में ही बोलते हैं, जिसको आप लोग लिख लेते हैं और खुश हो जाते हैं हाँ मैंने लिख लिया मैटर। यूट्यूब पे लगाएंगे 80 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन, लिख लिए खुश हो गए, उसके बाद फिर उसके बाद बताते हैं मेरी स्पीड 80 की है, मेरी स्पीड 100 की है, मैं 120 लिख लेता हूँ। तो बेटा लोग जो भी स्पीड आप लोग काउंट करते हैं, जो भी लोग लिख रहे हैं, चाहे 80 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 120 की हो, स्पीड हमेशा मैटर करती है डिक्टेशन की क्वालिटी पे, ठीक है। जैसे ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक का मतलब होता है पानी पीना, दारू पीना, या हो सकता है कि और कुछ भी हो, तो है तो लिक्विड ही, बट लेने का तरीका आपका बदल जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप ग्लास में पीते हैं, कुछ चीज़ें आप वाटर में पीते हैं, कुछ चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा पी के पीते हैं, ठीक है। तो मेनली आपका जो डी का मैटर आना है, एसएससी में ग्रेड डी का आना है, सो उसके लिए आपको थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कितने भी हार्ड वर्ड्स आ जाएं आप उसको लिखने की कोशिश करिए। और स्पीड और एक्यूरेसी जब दोनों चीज़ें मेंटेन करेंगे सो तब जाके आपका डी का मैटर निकलेगा, ठीक है। सो ज़्यादा इजी मैगजीन्स नहीं लिखना है, हार्ड वर्ड्स खोजिए और लिखिए, ओके। सो क्लास इज ओवर, गुड नाइट आप सभी लोगों को एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आप सभी लोग अपना नया साल अच्छे तरीके से बिताएं, केवल पहला दिन ही नहीं बाकी दिन भी नया साल में आता है, सो ठीक है, जी वेलकम।
कल आप सभी लोग 7 बजे क्लास ज्वाइन कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।